Good morning everyone. Students, till now we have completed a few journal entries like started business with cash, uh, purchased goods on cash basis, on credit basis, sold goods on cash basis and credit basis, and made payment or received payment, paid expenses, and we have received income. We have returned the goods like purchase return and sales return, right? So these normal entries we have learned. I'm telling to those students who have just joined, fine. So it's my suggestion to all of you, first watch the previous videos, only then you will understand rule, regulations and everything, and then start the current one. Okay, so today students we will start the discount portion. Fine, we have done the journal entries of the sale and purchase. You might be knowing that when we go to the market, so we generally ask for the discount. When we go to the market to buy, to purchase, so we ask the shopkeeper to give us the discount, right? And if we think from business point of view, means if you are selling, then we have to allow discount. Fine, as a customer we ask for the discount, means we receive discount. And if we talk from business perspective, so business allowed the discount, only then customer receives. So these are two different terms: discount allowed and discount received. Discount is allowed. Discount allowed means discount is given by the seller, fine, means business. And discount received is taken by the purchaser. जो परचेज करता है उसको डिस्काउंट मिलता है, एंड जो बेचता है गुड्स को वो डिस्काउंट अलाउ करता है. ऑल राइट, so discount allowed and discount received, these two terms will meet very soon. Okay, now we have two types of discount. One is trade discount and cash discount. Students, trade discount, it's given here in the definition: this discount is allowed by the wholesaler or manufacturer to the retailer at a fixed percentage on the listed price of the goods, and it's generally given on the bulk purchases. When you buy the goods in a heavy quantity, then this discount is offered. If you buy in small quantity, then you don't get this discount. When you buy in heavy quantity or bulk quantity, only then you get the benefit of this trade discount. Fine. And students, I tell you, this trade discount, we don't pass the entry of the trade discount. Very soon I'm telling you how to do it's practical. But just remember in your mind, trade discount, when we deal with the trade discount, so we don't pass the entry of trade discount. We only reduce the price outside of the entry, and then we do. And cash discount, we show its entry in the journal. Okay, and cash discount is given for the prompt payment. When we want that somebody should make you the payment early, then you offer this cash discount. Okay, let's take an example. Okay, let's do the differences. All the points will be clear instead of wasting the time here and there. So it's telling meaning. Trade discount is allowed by wholesaler or manufacturer to the retailer at a fixed percentage on the printed or a price list. Means it's given by the wholesaler or manufacturer to the retailers. The MRP which we tell, you must be knowing, students, when you go to the market to buy something, we ask the MRP. And when the sale or discount is being offered by those person, so they says ki 50% on MRP, 20% on MRP. So this MRP is what? This is the tag price, or you can say the list price. Fine. And cash discount is allowed if the customer makes the payment immediately or within a fixed period. Okay, you just tell, if you make me payment right now, I will give you 5% discount. Whatever the price you have stipulated between both the parties, जो भी आपका प्राइस डिसाइड हुआ है उस पर कहता है कि अगर आप मुझे अभी पेमेंट कर देंगे तो आई विल गिव यू 5% डिस्काउंट, या विद इन अ वीक इफ़ यू मेक मी द पेमेंट देन आई विल गिव यू द 5% डिस्काउंट. तो ये आपका इमीडिएट पेमेंट पे दिया जाता है, एंड दिस इज फॉर द बल्क क्वांटिटी, राइट. Next difference is telling when allowed. So it is allowed when goods are purchased
in a specific quantity. That is what I have told you, bulk quantity और specific quantity. They said कि अगर आप 10 मिनिमम खरीदते हैं, 10 आइटम खरीदेंगे तो हम आपको ये डिस्काउंट देंगे, उससे कम पे नहीं दिया जाएगा. तो दिस इज व्हाट स्पेसिफाइड क्वांटिटी. And here it is allowed when payment is made on or before a specified date. On means today, or specified period means today is whatever the date means, within 5 days suppose if you make the payment, so this discount will be given. Okay, what is the object? Generally it is allowed to the retailers to enable them to make some profit even if they sell the goods at their catalog price, right? जो वो कैटलॉग प्राइस पे बेचते हैं, ट्रेडर्स, रिटेलर्स, स्पेशली रिटेलर्स किस पे बेचते हैं? एमआरपी पे. तो उनको क्या फ़ायदा होगा? अगर वो एमआरपी पे ही खरीदेंगे और एमआरपी ही पे बेचेंगे तो दे वॉन्ट बी एनी प्रॉफिट. फाइन. सो दिस इज टू प्रोवाइड बेनिफिट टू द रिटेलर. ओके, कि आप एमआरपी पे बेचिए एंड हम आपको एमआरपी से 10% कम पे दे रहे हैं, तो दैट इज देयर ट्रेड डिस्काउंट. ओके, सो दे विल हैव द मार्जिन ओवर देयर. And it is allowed to encourage quick or prompt payment. Fine. ये आपका जल्दी पेमेंट के लिए प्रोवाइड किया जाता है कि here the seller motivate the purchaser that he should make the payment timely. उनको मोटिवेट करने के लिए कैश डिस्काउंट ऑफर किया जाता है. इफ़ यू मेक द पेमेंट विद इन अ लिमिटेड टाइम ऑफ द पीरियड यू गेट द डिस्काउंट. सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट. Next, it is telling recording in the books of account. I have told you students, trade discount is not recorded in the books of account and cash discount is recorded in books of account. Okay. Now deduction from invoice. It is deducted from the invoice. Invoice means जो price आपको offer किया जाता है, list price, right? उसमें से deduct किया जाता है and it is not deducted from the invoice price. से deduct नहीं किया जाता. जो आपका price decide हो जाता है उस पर ये दिया जाता है. Okay. So, before proceeding this trade discount and cash discount entries, okay, one more thing let us discuss. Here it is telling us the compound entry. Must be knowing students compound entry, when we compound the things, like हम दो चीज़ों को मिला देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं. तो it's very very simple. We have learned the entries of your expenses. Fine. As they have taken an example, salary paid, rent paid, both are expenses and they have paid on the same date, 31st March. Okay, so if I say salary paid, the entry is, you must have learned, salary is your expenses. Fine. Paid, so all the expenses are debit. My entry is salary account debit to cash. Suppose 200 rupees I have paid for salary. Fine. And the date is 31st March. Again the same thing, on the same date 31st March I have to pay the rent also. Fine. Now the entry is rent account debit to cash. 500 rupees I have paid for the rent. Okay. Now two entries we have passed. Salary account debit to cash and rent account debit to cash, separate two entries. Now I'm talking about the compound entry. Two conditions must be fulfilled by these. Date should be the same, only then you can compound these entries. Fine. Second thing, कि either side should be same. Either this credit side should be the same as there is a cash and here is also cash. So this is the same head, same account, or if your debit side is same. ठीक है, एक तरफ आपका सेम होना चाहिए, सेम अकाउंट होना चाहिए, only then you can make it a compound entry. Fine. Now let's see how to compound it. It's 31st March. You can mention the date 31st March. Salary account debit. Salary account debit by 200. Fine. And second one is your rent. I can write rent account debit by 500. All right. So on the same date, salary and rent I have debited. 2, as this is the same head, so I can total this amount. Fine. So 200 this credit and 500 this credit. It's total 700. 2
cash. It is 700. Fine, students. So at last you will find your debit and credits total will be equal. Okay. So this is your compound entry which you will find frequently now. And one thing, students, I just forgot to tell you, when we prepare the journal, right, so we have to do its total also. I'll show you how to do it in the recent illustrations. So debit side and credit side total you have to do, and that will be same. Fine. Now compound entry we have learned how to pass this. Let's have an illustration. Illustration number 4, how to deal with all these discount entries, how to pass this. It's telling now onwards, instead of writing in the paper, I'll just show you the book. Here the statements are given and I'll tell you the solution. Paid cash to Mahesh and discount received from him. Fine. Amount is given here. So students, it's telling paid cash to Mahesh. Think properly. Paid cash means cash is going. 2 points I have told you to keep in your mind always. The first one, you have to think from business point of view, and second one, you have to pass the entries in the books of business. Business की books में entry करनी है and business के ही point of view से सोचना है. तो who are you? You are business. What you are doing? Paid cash to Mahesh. बिजनेस महेश को पैसा दे रहा है. तो व्हाट इज गोइंग, क्या जा रहा है? पेड कैश. कैश इज गोइंग. फाइन. डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कैश इज गोइंग. ओके. दूसरा है महेश. किसको मिल रहा है? महेश. महेश इज द रिसीवर. महेश इज द पर्सनल अकाउंट. सो रूल सेज कि डेबिट द रिसीवर. तो महेश इज द रिसीवर एंड हाउ मच यू आर पेइंग टू महेश? 9,600. ओके. So let's pass the entries. Your receiver is Mahesh. Mahesh account debit. Fine. And what you are paying? You are paying cash. So what special is here? Students, it's telling paid cash to Mahesh को आपने 9,600 दिया. तो क्या गया आपके पास से? कैश गया है. कितना गया है? 9,600 कैश गया है. ठीक है. एंड फर्दर इट इज टेलिंग एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम. 400 आपको उनसे डिस्काउंट मिला है. तो दे हैव गिवन द स्टेटमेंट लाइक दिस. हिडन फॉर्म में दिया है कि डिस्काउंट मिलना. दीज आर 2 टर्म्स, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड. आई हैव टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग. ओके. तो रिसीव कोई चीज़ होती है तो वो इनकम है या एक्सपेंसेस? इनकम. रिसीव होना इज योर इनकम एंड अलाउड यानी कि पे करना इज योर एक्सपेंसेस. ठीक है. सो ऑल द इनकम्स आर क्रेडिटेड एंड ऑल द एक्सपेंसेस, यानी डिस्काउंट अलाउड होता है तो वो डेबिट होता है, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड है, मिल रहा है, तो ये आपको क्रेडिट करेंगे हम. ठीक है. नाउ डिस्काउंट यू आर रिसीविंग. कितना? 400 आपका डिस्काउंट रिसीव्ड है. ठीक है. एज आई हैव टोल्ड यू, रिसीव है तो इट्स योर गेन. आपको फ़ायदा हो रहा है. स्टूडेंट्स, आपको कोई 400 रुपये का डिस्काउंट देता है यानी आप रिसीव करते हैं तो वो आपका गेन है. एवरी गेन एंड इनकम हैज़ अ नेम. एवरी एक्सपेंसेस एंड लॉसेज हैव देयर ओन नेम. तो इस गेन का नाम क्या है जो फ़ायदा हुआ है आपका? इसका नाम है डिस्काउंट रिसीव्ड. हाउ मच यू हैव रिसीव्ड? 400. ओके. So now tell me, I didn't mention in the column of Mahesh. Okay, this was the hidden information you have to find out. Now, how much you are paying? यानी आपने महेश से कुछ खरीदा था पहले. ठीक है. और अब आप पेमेंट कर रहे हैं. पेमेंट कर रहे हैं तो कैश जा रहा है. हमने क्रेडिट कर दिया. कितना पे किया? 9,600. एंड आपको महेश से डिस्काउंट मिला है. डिस्काउंट रिसीव्ड. आपको फ़ायदा हो गया ना. कितने का? 400 रुपये का आपको डिस्काउंट मिला है. तो टोटल आपको कितना पे करना था महेश को? दिस इज 9,600 and 400. दैट इज योर 10,000. फाइन. सो यू आर सपोज टू पे 10,000 rupees to Mr. Mahesh, and out of this 10,000 you have paid 9,600 in cash, and you have received discount which is your income, and we have credited 400. Everything we are doing according to the rule, students.
महेश पर्सनल अकाउंट है, हमने रिसीवर को डेबिट कर दिया. डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कैश इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द रियल अकाउंट, क्रेडिट कर दिया. नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग ये इनकम, ये गेन है आपका, हमने क्रेडिट कर दिया. ठीक है, तो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस एंट्री. फाइन. नाउ वाइस वर्सा अगेंस्ट दिस इट इज टेलिंग, यहाँ हमने क्या किया था, पेड कैश. नाउ रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण. अब आपको कैश मिल रहा है. अंडरस्टूड? पे अटेंशन ऑन द स्टेटमेंट. रिसीव्ड कैश, मिल रहा है, कैश इज कमिंग. डेबिट व्हाट कम्स इन. किससे मिल रहा है? अरुण. ठीक है, तो अरुण कौन है? गिवर है. पर्सनल अकाउंट है एंड गिवर है. ठीक है. एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम. स्टूडेंट्स, आपको किसी से मान लीजिए 10,000 रुपीज़ लेना है, राइट, एंड ही हैज़ कम टू यू, कहता है मेरे पास 10,000 नहीं है, प्लीज़ 500 का मुझे डिस्काउंट दे दो. तो डिपेंड्स अपॉन यू ना, कि आप कहेंगे नहीं नहीं मैं कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा, मुझे पूरा 10,000 चाहिए, तो आपको 10 मिलेगा. ठीक है, उसके पास अभी नहीं है तो वो बाद में देगा, पेंडिंग रह जाएगा. और अगर आप कहते हैं ओके फाइन, ठीक है, आप मुझे, मैं आपको 500 का डिस्काउंट दे रहा हूँ यानी अलाउ कर रहा हूँ, ओनली देन दैट पर्सन विल बी पेइंग यू लेस. ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है. आप जब डिस्काउंट अलाउ करते हैं तब दूसरा आपको कम पैसे देता है. He deduct the discount. Fine. Now received cash from Arun. Let's pass the entry. How do we do that? So received cash. What is coming in the business? We have to think from business point of view. क्या आया business में? Cash आया. ठीक है, cash account debit. How much? It's 4,900. Okay. 4,900 cash आपने receive किया. किससे किया है? अरुण से किया. It's telling received cash from Arun to Arun. Okay. Arun is the giver, हमने क्रेडिट कर दिया. कितना? Let us stop. It's telling and discount allowed to him. और मैंने उसको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट अलाउ कर दिया. आपने डिस्काउंट अलाउ किया है. See, you are supposed to receive more, but as you have allowed 100 rupees discount, so this discount is your loss, and losses are debited. Expenses and losses are debited, na? And every expenses and loss is having the name. So what is the name? Discount allowed account debit. Fine. Cash account debit, discount allowed account debit to Arun. Fine. So how much discount we have allowed? 100 rupees. I think it's clear now कि 4,900 आपको मिल गया, 100 रुपये का आपने डिस्काउंट दे दिया. ठीक है, तो कितना लेना था? आपको लेना था 5,000. Understood that? So that way we have done the entry. Here we have made the payment. Students, now you should be very clear कि आप यहाँ पेमेंट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? आपने कुछ क्रेडिट पे परचेज किया होगा, उधार खरीदा होगा, राइट. यहाँ पे आप कैश रिसीव कर रहे हैं, पेमेंट रिसीव कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं रिसीव? क्योंकि आपने कुछ क्रेडिट पे बेचा होगा. यू मस्ट हैव सोल्ड समथिंग टू मिस्टर अरुण ऑन क्रेडिट बेसिस, दैट्स व्हाई यू आर रिसीविंग. क्लियर? ओके. वन ट्रिक आई टेल यू, इफ़ यू गेट कन्फ्यूज समवेयर, सो कीप इट इन योर माइंड स्टूडेंट्स, कि जिस तरफ कैश आता है, द साइड वेयर वी हैव अ कैश, डिस्काउंट कम्स इन दैट एरिया ओनली. हियर यू कैन सी कि कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी आपका क्रेडिट हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे कैश आपका डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट हो रहा है. ऑल राइट. ओके. Okay, fine. Illustration number 5, it's telling, although now we have completed all these entry, I'll give you the homework, but let me tell you about this. You may get confused otherwise. April 10, it's telling paid insurance premium by check. Students, till now I didn't tell you about the bank transactions. If you find somewhere, जैसे purchase goods on cash basis but made the payment by check, ओके, चेक से पेमेंट किया तो टू कैश के बदले हम क्या करेंगे? टू बैंक कर देंगे. ओके, हेयर इट्स टेलिंग कि पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, वी नो दैट इंश्योरेंस प्रीमियम इज योर एक्सपेंसेस, सो एंट्री इज व्हाट? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट. जैसे सैलरी डेबिट, रेंट डेबिट, ऐसे ही इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट वी कैन शो लाइक दिस. इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, till now we used to write cash, but now I will not write. Why? Because it's telling made payment through check. तो जहाँ चेक होगा वहाँ आप क्या लिखेंगे? बैंक लिखेंगे. ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक. फाइन.
Next, it's telling on April 12, paid for life insurance premium of Sri Pratap Roy by check. Students, please pay attention. Life insurance premium is on the life of somebody. Fine. And it is your personal nature expenses. तो आपको बताया था पर्सनली कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए आप बिजनेस से कुछ भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो उसका नाम क्या हो जाता है, ड्रॉइंग हो जाता है. आइदर यू हैव ड्रॉन द मनी और एनी गुड्स. ओके, सो हेयर यू हैव पेड व्हाट, पेड कैश. दैट मीन्स या तो आप निकाल के पैसा लेके जाते हैं या वहीं पे ही आप पर्सनल यूज के लिए किसी को पेमेंट कर देते हैं. तो दोनों ही चीजें क्या होती हैं, ड्रॉइंग होती हैं. तो हेयर you have paid then and there only cash you have paid from your business for your personal expenses. Life insurance policy is your personal expenses. ठीक है, तो आपने प्रीमियम पे किया है and here you have paid of 2000 rupees. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ड्रॉइंग. ओके, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश. आप पर्सनल यूज के लिए ड्रॉ करते हैं तो दैट इज ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू cash because cash has gone from the business. But it's telling by check है तो आप क्या करेंगे, to bank. Drawing account debit to bank will be the entry. Fine. And this is the same which I have taught you. On 30th April, the date is same and so many expenses they have done, like paid wages, advertisement expenses and salary paid. So here we can do the compound entry, like wages account debit, advertisement account debit, salary account debit to cash. Fine. And if we say additionally, if we say कि made payment by check, तो हम to bank कर देते हैं. All right, students. So these illustrations you must do, and tomorrow, I mean in the next class, I'll teach you something else and regarding this trade discount and cash discount only. I just show you. I've just told you that when we pass the journal entry, so we have to do the total. So this way, and as it is based on double entry system, this debit side and credit sides, its total will be same. So in the last, you have to write grand total, which they didn't write. Grand total, and this is debit and credit. This will be fine, students. Thank you so much.